Many of us think prayer is simply a list of demands we present to a higher power. We treat it like a shopping list for life. We ask for a better job, more money, good health, or success for our children. But this is a very limited view. This is not the real essence of prayer. The true meaning of prayer is not about asking for things from the outside world. It is about connecting with the source of all things. It is a process of aligning ourselves with the universal energy that governs everything. It is a conversation, not a monologue. It is a moment of surrender and connection. When you pray, you are not just speaking words into the air. You are opening a channel within yourself. You are creating a bridge between your conscious mind and the vast, silent power that lies within you and all around you. Prayer is the act of turning inward. It is about quieting the noise of the world so you can hear the gentle whisper of your own soul. It is a sacred time you set aside to reconnect with your deepest self and with the divine. It is less about changing your circumstances and more about changing yourself. This change within you is what ultimately changes your outer world. Think of prayer as plugging a lamp into a socket. The lamp has the potential to give light, but it cannot do so on its own. It needs to be connected to the source of electricity. Similarly, we all have immense potential within us. We have the power to create, to heal, and to achieve great things. Prayer is the act of plugging ourselves into the universal power source. It is how we draw the energy, the wisdom, and the strength we need to light up our own lives and the lives of others. It is a conscious decision to connect with something larger than ourselves. Therefore, the next time you sit down to pray, shift your focus. Instead of starting with a list of what you want, start with a feeling of gratitude. Start with the intention to connect, not just to collect. See prayer as a sacred dialogue. It is a time to speak, but more importantly, it is a time to listen. It is a time to feel the presence of a higher intelligence and to align your personal will with the divine will. This simple shift in perspective can transform your prayers from a wish list into a powerful tool for personal transformation. Winners don't just ask, they connect. Now that we understand prayer is about connection, we must understand the most crucial element that makes this connection strong. That element is faith. What is faith? Faith is not blind belief or superstition. It is not hoping for something without any basis. Faith is a deep inner knowing. It is an unshakable trust. It is the firm conviction that what you are praying for is already on its way to you, even when you cannot see any evidence of it in your physical world. Faith is seeing with your heart when your eyes see only obstacles. Prayer without faith is like a car without fuel. The car may be beautiful and powerful, but it will not move an inch. Similarly, your words of prayer may be eloquent and sincere, but without the energy of faith, they have no power to create change. They remain just empty words. Faith is the fuel that powers your prayer. It is the ingredient that turns a simple thought into a dynamic, creative force. When you pray with faith, you are not just hoping for a result. You are commanding it with the quiet confidence of your soul. You are acting from a place of certainty, not doubt. Many people confuse faith with wishful thinking. They are not the same. Wishful thinking is passive. It says, I hope this happens. Faith is active. It says, I know this will happen. Faith is a choice. You choose to believe in the best possible outcome. You choose to trust in the goodness of the universe. You choose to hold on to your vision, even when everyone around you tells you it is impossible. This is not ignorance. This is a higher form of wisdom. It is the wisdom to look beyond temporary circumstances and see the ultimate reality you wish to create. So, faith is the bridge between your prayer and its manifestation.
It is the emotional and spiritual certainty that your connection to the divine is real and that your prayers are being heard and answered. Without this bridge, your prayers cannot cross over from the world of thought into the world of reality. It is the absolute unconditional trust that even when you cannot see the path, a path is being made for you. To build a life of success and fulfillment, you must first build this unshakable foundation of faith in your heart. Let me share a true story that beautifully illustrates the power of prayer combined with unwavering faith. There was a woman whose young son fell gravely ill. The doctors diagnosed him with a rare and aggressive disease. They gave him only a few months to live and said there was nothing more they could do. The news was devastating. Any parent would have been crushed by despair. But this mother, while deeply saddened, refused to accept the doctor's verdict as the final reality. She knew there was a higher power at play. She decided to fight this battle not with medicine alone, but with prayer. Every single day she would sit by her son's bedside. She did not cry or beg in her prayers. Her prayers were different. She would close her eyes and visualize her son as a perfectly healthy, strong, and happy boy. She would see him running in the park, laughing with his friends, and growing up to be a fine young man. She did not pray for his healing. She prayed from the state of his healing. In her mind and heart, her son was already healed. She would thank God every day for her son's perfect health. She held this vision with absolute, unshakable faith. Her relatives and friends tried to reason with her. They told her to be realistic and to prepare for the worst. They saw her as a woman in denial, unable to face the harsh truth. But her faith was stronger than their doubts. She politely listened to them, but never let their negativity penetrate her heart. Her inner certainty was her shield. For her, the doctor's report was just a fact of the current reality. But her faith was the truth of the ultimate reality. She knew that miracles happen not when we hope for them, but when we expect them with every fiber of our being. Months passed. The boy's condition, against all odds, did not worsen. In fact, slowly but surely, he began to improve. The doctors were baffled. They ran new tests and could not explain the changes they were seeing. The disease was receding. Within a year, the boy was declared completely free of the disease. He was healthy, active, and full of life, exactly as his mother had seen him in her prayers. The doctors called it a 1 in a million spontaneous remission, but his mother knew the truth. It was a miracle born from a mother's relentless prayer, fueled by the incredible power of unwavering faith. जब आप अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास का एक शक्तिशाली तत्व जोड़ते हैं, तो सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर होते हैं। ये बदलाव आपके अंदर ही शुरू होता है। विश्वास एक मास्टर की है, जो आपके अंदर गहरा बदलाव लाता है। पूरी तरह से आपका अस्तित्व एक नई, ऊंची फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। सबसे पहला बदलाव जो आप महसूस करेंगे, वो है आपकी सोच में। जहां पहले शाख और दार था, वहां अब धीरे धीरे एक शांत विश्वास उगने लगता है। आप समस्याओं को अब एक बड़ी दीवार नहीं, बल्कि एक मौका समझने लगते हैं, जिससे आप और मजबूत बन सकें। आपकी सोच अब कमी और कमी की जगह समृद्धि और संभावनाओं की तरफ बदल जाती है। ये सोच का बदलाव अपने आप आपकी भाषा और ऊर्जा में भी बदलाव लाता है। आप बोलने का तरीका बदल जाता है। मैं नहीं कर सकता या ये मुमकिन नहीं है जैसे शब्द धीरे धीरे आपकी जुबान से गायब होने लगते हैं। उनकी जगह आप संभावनाओं और शक्ति से भरे शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं। आप अपने लक्ष्यों के बारे में यकीन के साथ बात करते हैं, सिर्फ आशा के साथ नहीं। ये सकारात्मक भाषा आपके विश्वास को मजबूत बनाती है और संसार को एक स्पष्ट संकेत भेजती है कि आप क्या रचना चाहते हैं। आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। आपके आसपास के लोग आपकी आंखों में एक नई चमक, आपके चलने में एक नया विश्वास और आपकी उपस्थिति में एक नई शांति महसूस करेंगे।
आप सकारात्मक लोगों और स्थितियों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि आप ये समझ पाते हैं कि जो चमत्कार आप ढूंढ रहे थे वो बाहर नहीं था। असली चमत्कार आपके अंदर का बदलाव है। बाहरी दुनिया बस आपके अंदर की दुनिया का दर्पण है। जब आप अपनी अंदर की स्थिति को डर से विश्वास और शक से यकीन में बदलते हैं तो बाहरी दुनिया भी मजबूर हो जाती है कि वो आपकी नई सोच के हिसाब से खुद को बदल ले। जो आरोग्य, सफलता या रिश्ता आप प्रार्थना में मांग रहे थे वो असली चमत्कार नहीं था। असली चमत्कार तो ये था कि आप वो व्यक्ति बन गए जो उस सफलता को अपनी जिंदगी में बना सकता है और उससे संभाल सकता है। इसीलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करना सबसे बड़ा स्वयं सशक्तिकरण का काम है। ये आप खुद अपनी अंदर की स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण ले लेते हैं। आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं, उनके रचयिता बन जाते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि आप तकदीर की आंधी में उठता एक पत्ता नहीं है, आप खुद वो आंधी हैं। ये अंदर का बदलाव विश्वास भरी प्रार्थना का सबसे बड़ा वरदान है। ये एक ऐसी शांति, शक्ति और उद्देश्य देता है जो कोई भी बाहरी उपलब्धि कभी नहीं दे सकती। इसी पर एक सही, सफल और सुखमयी जीवन की नींव रखी जाती है। तो अब सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी में इस प्रकार की प्रभावशाली विश्वास से भरी प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कोई कठिन क्रिया या पेचीदा विधि की जरूरत नहीं है। सबसे प्रभावशाली तरीके अक्सर सबसे सरल होते हैं। यहाँ एक बहुत ही सरल 4 कदमों का प्रोसेस है जिसे कोई भी अपना सकता है अपनी प्रार्थनाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए। सबसे पहला कदम है एक शांत जगह ढूंढना और अपने मन को शांत करना। जब तक आपका मन रोजमर्रा की अफरा तफरी और शोर से भरा रहेगा तब तक आप डिवाइन से जुड़ नहीं सकते। कुछ गहरी सांसें लीजिए, अपनी चिंताएं और चिंताओं को छोड़ दीजिए, खुद को शांति और सुकून की अवस्था में ले आइए। दूसरा कदम है आभार का भाव जगाना। कुछ मांगने से पहले थोड़ी देर के लिए इस संसार का, अपनी जिंदगी का, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का और हर उस चीज का शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास है। आभार एक शक्तिशाली भावना है जो आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाती है। यह आपका ध्यान कमी से हटाकर समृद्धि पर ले आता है। जब आप आभार के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप संसार को यह संकेत देते हैं कि आप और अधिक वरदान पाने के लिए तैयार हैं। एक आभारी दिल एक खुला दिल होता है और खुला दिल ही चमत्कार को स्वीकार कर सकता है। तीसरा कदम है अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से सोचें और उसे महसूस करें जैसे वो अभी तुरंत पूरी हो गई हो। सिर्फ शब्द मत बोलिए, उस भावना को महसूस कीजिए। अगर आप आरोग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो अभी इसी पल अपने शरीर में स्वास्थ्य की खुशी और ऊर्जा महसूस कीजिए। अगर आप किसी नए मौके के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उस मौके को पाने की खुशी और आभार को अभी महसूस कीजिए। आपकी भावनाएं ही वो भाषा है जो संसार समझता है। एक स्पष्ट सोच और एक सकारात्मक शक्तिशाली भावना का संगम ही सबसे मजबूत संकेत संसार तक भेजता है। यही है रचनात्मक प्रक्रिया। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपनी प्रार्थना को पूरी विश्वास के साथ छोड़ दीजिए। जब आप प्रार्थना कर चुके हैं तो उससे ऊपर वाले के हवाले कर दीजिए, पूरे भरोसे के साथ कि आपकी बात सुनी गई है और उस पर काम हो रहा है। कैसे होगा इसकी चिंता मत कीजिए। बार बार परिणाम देखने की कोशिश मत कीजिए, ये शक की निशानी है और शक प्रार्थना का असर खत्म कर देता है। आपका काम है मांगना, विश्वास करना और फिर छोड़ देना। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। ये समर्पण का कदम ही विश्वास का अंतिम प्रदर्शन है। ये है आपका ये कहना, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मैं संसार पर भरोसा करता हूं। इस सरल विधि को अपनाइए और आप देखेंगे कि सबसे बड़े चमत्कार आपके आसपास नहीं बल्कि आपके अंदर घटित होते हैं।